Hey guys, welcome back to the channel. So in today video we are going to see how you can connect to the database using ADO.NET. ओके, सो पिछले वीडियो मैंने डिस्कस किया था आपको एक नया वेब एपीआई प्रोजेक्ट बनाकर, ठीक है, और उसमें हमने यूज की थी एंटिटी फ्रेमवर्क. बट इन मोस्ट ऑफन केसेस लाइक पीपल ट्राई टू गो विद द ADO.NET बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है एंटिटी फ्रेमवर्क से, राइट. सो आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग ADO.NET के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट में पहले चेंज करेंगे डेटाबेस प्रोजेक्ट में, ठीक है. तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है देन आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो बिकॉज आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट का, ठीक है. तो हम इसी प्रोजेक्ट में एक क्या करेंगे, मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे और उसी मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ADO.NET. ओके, सो चलो पहले हम क्या करेंगे, इंटरफेस क्लास में जाकर एक मेथड क्रिएट कर लेंगे इंटरफेस का, जहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और विल ट्राई टू फेच सम एम्प्लॉय बाय यूजिंग आईडी. ओके, सो विल डू वन थिंग, विल यूज द सेम मेथड. ओके, बट यहाँ पे क्या होगा कि हम अपने नेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, एडीओ नेट लगा देंगे, ठीक है. नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड इन अ रिपोजिटरी क्लास. ओके, सो मेन जो हमारा लॉजिक होगा यहीं पे होगा. आप देखो यहाँ पे रेड मार्क दिखा रहा है बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस एन मेथड एंड वी नीड टू इम्प्लीमेंट दैट मेथड. ओके, सो चलो हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पब्लिक डालो, ठीक है. ये मेथड को आप देखो, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द एंटिटी फ्रेमवर्क टू इम्प्लीमेंट इट. ओके, सो ये जितने भी मेथड्स है ये सारे एंटिटी फ्रेमवर्क के यूज किए हुए हैं, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज ADO.NET. ओके, so first and foremost thing for ADO.NET is you need to install the package system.data.sqlclient. Okay, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, database project पे जाएंगे, manage NuGet package पे जाएंगे, and then in the browse we'll type something like system.data.sql. okay, तो यहाँ पे आपको सजेशन दे देगा ये वाले का, ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर लो. दिस इज द NuGet package we need for connection with the database using ADO.NET. okay, सो आउटपुट में जाकर देखो, इट्स डन, इट्स फिनिश्ड. ओके, सो नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट द लॉजिक. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल राइट समथिंग लाइक यूजिंग, विल ट्राई टू फर्स्ट establish the connection. Okay, so SQL connection, probably it is asking for the reference so you can add it. Okay, name it as connection. Okay, is equal to new SQL connection. So that's done. So basically here you need to establish the connection with the database. So what we need here is the connection string. Okay, so we'll write something like connection dot कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ठीक है. यहाँ पे आपको तीन चीज़ें लिखनी है. पहली चीज़ हो गई सर्वर, सर्वर इज इक्वल टू लेट्स से XYZ दे दो, सेमी कॉलम, देन डेटाबेस, डेटाबेस इज इक्वल टू सेमी कॉलम दे दो, एंड देन यू हैव टू राइट ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू. दिस इज जस्ट टू टेल द प्रोसेसर दिस इज अ विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी. ओके, सो ये मैं डीबी से लो, इससे अच्छा अगर आपने पिछला बार देखा होगा सेशन तो यहाँ हमने इस्टेब्लिश की थी कनेक्शन ऐप सेटिंग में, ठीक है, ये वाली चीज़. तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इट्स द सेम थिंग. सो चलो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ. सो दैट्स डन, हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार हो गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी डूइंग इज विल बी ओपनिंग दिस कनेक्शन. ओके, सो कनेक्शन डॉट ओपन, दैट्स डन. नाउ अवर नेक्स्ट थिंग इज टू select a query, right? So we need to build a query. So उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, विल बी यूजिंग SQL command. Okay, so SQL command, let's see, cmd is equal to new SQL command. Okay, done, and then यहाँ पे we will pass the query. Okay, so let's say select star from employee. Okay, where, because this is the table which we are going to use, so where employee id is equal to, ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं id. Okay, and then you need to pass the connection as well. Okay, so this is done. Now you need to prepare the parameter for it. Okay, because you are passing this id as a parameter. So यहाँ पे आप लिखोगे cmd dot parameters dot add. Okay, then यहाँ पे लिखोगे new SQL parameter, right, and then यहाँ पे लिखोगे आपने जो यहाँ पे पास किया, right, so this is id, so अंडर कोटेशन id लिखो, कॉमा,
ये जो आप पास करना चाह रहे हो, दिस इज समथिंग यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द यूआई और फ्रंट एंड साइड, राइट, और फ्रॉम द स्वैगर इन दिस केस, सो यू नीड टू पास इट हियर. सो दैट्स डन. अब हमारा क्वेरी भी बिल्ड हो गया, राइट. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू execute this query. Okay, so उसके लिए हम क्या करेंगे, we'll be using SQL data reader for it. Okay, you can use data adapter also, but we'll be using SQL data reader. Okay, so SQL data reader, let's say reader is equal to, then you have to write cmd dot execute reader. Okay, and then okay, थोड़ा सा इसे सजा लेते हैं. Then you have to write while reader dot read. Okay, तो क्या होगा ना कभी कभी कि इन दिस केस आई एम गोइंग टू गेट अ सिंगल रिकॉर्ड. ओके, बट क्या होगा मोस्ट ऑफन इन केसेस वेयर यू आर गोइंग टू गेट द लिस्ट फ्रॉम द डेटाबेस, उस केस में क्या होगा, एक लिस्ट फेच होगा इस रीडर में. ठीक है, तो हमें पॉपुलेट कर रही होगी लिस्ट. ओके, बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू पॉपुलेट अ सिंगल मॉडल दैट इज एम्प्लॉय, बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट अ सिंगल रिकॉर्ड. ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काम करते हैं, राइट समथिंग लाइक एम्प्लॉय emp is equal to new employee. Okay, we'll populate this model and we'll return it. Okay, but let me do one thing here. So here also you need to like populate the employee only, right? So you will be writing something like employee employee is equal to employee. Okay, and then you need to populate this employee. Okay, so what is the first thing you have? Employee id is equal to, so this is integer, right? So you'll be writing something like this, integer, and then the reader, and this is not id, this is value from the table, so this is employee id. Okay, so similarly you have second field as employee name. Okay, so employee name is of string data type, right? So you'll be writing something like a string reader, then this should be your employee name. Okay, so you can query the database and see what is the value you have. Okay, so these are all the columns you need to specify in the query. Okay, in the SQL data reader. So यहाँ पे comma होगा. ठीक है, now the next thing is city. Okay, so you'll be writing something like decimal. So this is something called parsing. Okay, we are making sure this will not throw the error when we try to copy the value. Okay, so decimal, and then you have salary. So that should be fine enough. Now do one thing, since we declared this value, right, emp, you cannot return this value because the scope is local. So what you can do here is you can copy this to this employee. Okay, so this employee, so that should be good enough, and you need to return, right, so you need to return the here. Okay, so this is fine. So this is the implementation of this method, get employee id by ado.net, I mean using ado.net. Okay, now what you have to do is we'll go to the controller because we want to get this method using controller, right? So we'll create one controller method also here. So let's copy this and extend this method. So underscore video name. Okay, and then what is the method we want to get? So it's get employee by id underscore radio.net, right? uh, the parameter we are passing is the same, so rest other things will be same, right? Okay, so that is done. Let's try to execute it by putting some breakpoint here. Okay, so this is the method which we have created now. Let's try it out. id I'm giving 2. Okay, so if you see this table, okay, I do have like id 2 for Rahul, and this is the detail. Okay,
So let's hit this method, execute. So it came directly to the repository because there was no breakpoint at the controller side. So let's go by using F10 and see what is happening. Okay, so there are values. It is going to populate it. So there are no more values. So only there are one set of value. Okay. So this is going to be returning to the controller. Okay. Now let's click on the continue. So see, this is the result you are getting using ADO.NET. Okay. So this is how guys you can use the ADO.NET. If you have any query, you can shoot out in the comment box. मिलते हैं next video में till then bye bye.